Good morning, smart learners. How are you all? I hope you all are fit, fine, and healthy. I welcome you all in today's EVS class. Before starting this class, let us pray to Almighty for His blessings. All of you join your hands and recite the prayer. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। पूरे अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहें हम, जितनी भी दे भली ये जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Today we are going to do part 3 of chapter 10. The name of this chapter is Mapping Our Neighborhood. और आज हम इस चैप्टर में पेज 61 and 62 कंप्लीट करेंगे. So all of you be ready with your books. Open page 61. बच्चों यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? इंडिया का मैप. और इंडिया के इस मैप में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? ओ, डिफरेंट कलर्स. तो ये डिफरेंट कलर्स क्यों यूज़ किए हैं इस मैप पर? एक पर्टिकुलर चीज़ दिखाने के लिए. और आपको कैसे पता चलेगा कि ये कलर क्या बोलते हैं? इस मैप में क्या दिया हुआ है? यहाँ पर ये इंडेक्स दिया हुआ है, लीजेंड दिया हुआ है. तो इंडेक्स एक वो फीचर है मैप में जो हमें बताता है कि जो मैप में डिफरेंट कलर्स यूज़ हुए हैं उनका क्या मीनिंग होता है. आ legend or an index is given on a map. कहाँ दिया होता है इंडेक्स? मैप के ऊपर, जिसे हम legend भी कहते हैं. It explains the meaning of different colors used on the map. और ये एक्सप्लेन करता है जो मैप पे अलग अलग कलर दिए हुए हैं उनका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है. सो द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग इज नोन एज कार्टोग्राफी. तो कार्टोग्राफी क्या है? मैप को बनाने की कला. जो ये मैप बनाए जाते हैं उसको बनाने की आर्ट को कार्टोग्राफी कहते हैं. Maps are our friends and guide us as they provide us with useful information. तो मैप हमारे क्या हैं? फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं. क्यों मित्र हैं? क्योंकि वो हमें गाइड करते हैं, हमें बताते हैं, बहुत सारी ऐसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसकी हेल्प से हमारा काम आसान हो जाता है. स्टूडेंट्स देखो बड़े ध्यान से, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये एक ऐसी डिवाइस है जो हमें डायरेक्शंस को सर्च आउट करने में हेल्प करता है. और इस डिवाइस का क्या नाम है? कंपास. कंपास की हेल्प से हमें डायरेक्शंस पता चलती हैं.
जो इसमें निडल हिल रही है, इसका जो रेड पार्ट है, जहाँ पर रेड पार्ट का मार्क एरो होगा उधर ही नॉर्थ डायरेक्शन होगी। हमेशा जो निडल का पॉइंटर होता है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन ही बताता है। Do you know, given on page 60, the compass is an instrument used to tell the directions. कंपास एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें किसके बारे में बताता है? डायरेक्शंस के बारे में, दिशाओं के बारे में। Wherever you are, आप कहीं पर भी हो, the needle in a compass always points towards the north. हमेशा जो उसकी निडल है वो कहाँ पर होगी, किस डायरेक्शन को शो करेगी? नॉर्थ को। The Chinese were the first to invent the compass. और सबसे पहले कंपास को किसने इन्वेंट किया था, किसने बनाया था? चाइनीज लोगों ने। लेट अस समराइज द चैप्टर नाउ। चलिए देखते हैं हमने इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजों को समझा है। There are 4 main directions and 4 सब डायरेक्शंस। 4 मेन डायरेक्शन होती हैं और 4 ही सब डायरेक्शन होती हैं, और आपने इसका डायग्राम भी नोटबुक में बनाया है। मैप is a pictorial chart of a place on a flat surface. मैप क्या है? पिक्टोरियल चार्ट है और कहाँ ड्रॉ किया जाता है? फ्लैट सरफेस पर। A scale is a ratio between map distance and ground distance. स्केल क्या है? अनुपात है, रेशियो है मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस के बीच का। एंड एटलस इज अ बुक ऑफ मैप्स। और एटलस क्या है? एक ऐसी बुक है जिसमें क्या होते हैं? बहुत सारे मैप्स होते हैं। लेट अस एंजॉय द एनिमेशन ऑफ दिस chapter. We are social beings. We do not live alone in a locality. The area around our house is called our neighborhood. In our neighborhood, there are many buildings like hospital, school, post office, petrol pump, market, etc. These buildings provide services to us. Suppose you have to go to a new school and you do not know the way. Your mother makes a rough drawing showing the correct path from your house to that school. That rough drawing is called a sketch. A sketch shows some important landmarks. A landmark is a place or thing that becomes popular among people or that can be recognized easily. It helps us to locate a place where we have to reach. It could be a hospital, market, or a school. It is difficult to draw all the landmarks on paper. In order to overcome this difficulty, people use symbols for landmarks marked on sketches or maps. Different landmarks have different symbols. You must have noticed on your way to school there is a petrol pump, park, temple, etc. So to represent these as a landmark, we can use their symbols. Map. A map is a pictorial chart of a neighborhood, a city, or the world. It shows places, buildings, features, roads, railway lines, ponds, lakes, rivers, bridges, etc. It also shows directions in relation to sun. It contains signs, symbols, and scale to locate the places shown on it. You might have seen in your colony that the colony map is displayed at its entrance. This map helps the people to locate any house of the colony easily. It is of great help to new visitors. Directions on maps. East, west, north and south are the 4 main directions. Besides these, there are sub-directions also. A sub-direction lies between 2 main directions. The 4 sub-directions are as follows. NE, northeast. SE, southeast. NW, northwest. SW,
southwest. All maps follow the same method of showing the main and sub-directions. The language of maps. The basic elements of a map are its title, directions, scale, signs, and symbols. These elements make up the language of a map. This language of the map can help us to understand the information given in the map. The title of the map tells us what the map is about. For example, a political map of India shows boundaries of the different states of India and their boundaries and surrounding countries. The directions on a map are shown by an arrow mark in the upper right-hand corner. The arrow is generally upright and the tip of the arrow is marked N, north. It shows the north direction. Even if there is no arrow marked on the map, the top of the map shows the north direction. Once the direction of north is known, then east is to the right, west is to the left, and south is towards the bottom of the map. We can also show the sub-directions. Midway between the north and the east is the northeast. Midway between the east and the south is the southeast. Midway between the south and the west is the southwest. Midway between the west and the north is the northwest. Maps are always smaller than the area they represent. The actual distance between any 2 points on the ground is called the ground distance. The distance between the same 2 points on the map along a straight line is called the map distance. The ratio between the map distance and the ground distance is called the scale of the map. Suppose the straight line map distance between Delhi and Jhansi is 4 centimeter and the straight line ground distance between Delhi and Jhansi on the ground is 400 kilometer. Then scale of the map will be 4 centimeter is to 400 kilometer or 1 centimeter is to 100 kilometer. All maps are drawn according to some scale. The signs and symbols help us to read and understand the information given on a map. Maps do not have enough space to show the mountains, rivers, lakes, cities, roads, railways, airports, seaports, bridges, dams, temples, churches, mosques, forts, wells, settlements, etc. in their actual size. We can easily show these features on a map with the help of signs and symbols. These signs and symbols are much smaller in size and most of them are used by all countries of the world. Thus, these signs and symbols are also called conventional symbols. Besides these signs and symbols, colors and legends also help us to understand the information on a map. Different colors are used to show information on the map. For example, water bodies are shown in blue color, deep blue shows deep waters, and light blue shows shallow waters. Plains and lowlands are shown in different shades of green color. Highlands are mostly shown in different shades of brown color. Dark brown shows high mountains. Light brown shows hills. Farmland is shown in yellow color. A legend or an index is given on a map. It explains the meaning of different colors used on the map. The art of map making is known as cartography. Early maps were drawn by hand and now they are made on computers. Maps are our friends and guides as they provide us with useful information. Be ready to do the exercise now, given on page 61. Questioning. Tick the correct answer. Number 1. Which color shows the water bodies on a map? वाटर बॉडीज को शो करने के लिए मैप के ऊपर कौन सा कलर यूज किया जाता है? ग्रीन, ब्लू, ब्राउन. कौन सा कलर यूज करते हैं? ब्लू. द टॉप ऑफ द मैप ऑलवेज शोज द ईस्ट, साउथ, नॉर्थ.
जो मैप का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्या शो करता है, हमेशा कौन सी डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ। नंबर 3, द नंबर ऑफ मेन डायरेक्शंस इज, मेन डायरेक्शंस कितनी होती हैं, 2, 3, 4, कितनी होती है मेन डायरेक्शंस, यस बताइए 4। क्वेश्चन बी, राइट ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, द एरिया अराउंड अस इज कॉल्ड आवर नेबरहुड, कि जो हमारे आसपास का एरिया होता है वो हमारा नेबरहुड है, यस दिस इज ट्रू। Number 2, a landmark is a place or thing that cannot be recognized easily, कि लैंडमार्क वो जगह या चीज़ होती है जिसे हम पहचान नहीं सकते, दिस इज फॉल्स, क्योंकि लैंडमार्क को इजीली पहचाना जाता है और इसीलिए इनको मैप में यूज भी किया जाता है। नंबर 3, a map is a pictorial chart of a city or the world, yes this is true। Number 4, east, west, north and south are the 4 main directions, yes true। A book of map is called an album, this is false, क्योंकि जो बुक होती है जिसमें मैप्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, an atlas। Question C, fill in the blanks। Number 1, the area around our house is called our dash, क्या है उस एरिया को बोलते हैं जो हमारे घर के आसपास होता है, neighborhood। The top of every map points in the north direction, जो मैप के ऊपर होता है वो पॉइंट्स करता है हमेशा किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। A book of maps is called an atlas। Number 4, the Chinese were the first to invent compass, कि चाइनीज ने सबसे पहले कंपास को इन्वेंट किया था। Now D part, answer the following questions। Number 1, what is a landmark? Landmark क्या है? A landmark is a place or thing that is popular among people and can be recognized easily, कि वो साइन, वो सिंबल, वो चीज़ जो लोगों में आसानी से पॉपुलर होती है, लोग उसे पहचान सकते हैं और वो मैप के ऊपर यूज़ की जाती है। What is cartography? Cartography क्या है? The art of map making is called cartography। Number 3, what is meant by the scale of a map? Scale of map क्या होता है? A scale is a ratio, वो रेशियो होता है between map distance and ground distance, कि जो मैप के ऊपर लाइन ड्रॉ होती है और जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है उनके बीच का जो रेशियो होता है उसको ही स्केल कहते हैं। क्वेश्चन ई, थिंक एंड आंसर। व्हाट इज अ लीजेंड ऑफ अ मैप? मैप का लीजेंड का मतलब क्या होता है? यस, लीजेंड क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ इंडेक्स यूज्ड ऑन द मैप, जो मैप पे यूज करते हैं, एंड इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स यूज्ड ऑन द मैप। वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स। अब ये चैप्टर हमें क्या समझाता है? वी शुड हेल्प पीपल फाइंड अ प्लेस बाय गिविंग देम प्रॉपर डायरेक्शंस। हमें लोगों की हेल्प करनी है उनको सही दिशा बताने में, कि अगर वो किसी प्लेस को ढूंढ रहे हैं तो हम बता सकते हैं अगर हम श्योर हैं कि वो जगह वहाँ पर है। यस, इफ वी डू नॉट नो द लोकेशन ऑफ अ प्लेस वी शुड नॉट गिव देम रॉन्ग डायरेक्शंस। पर अगर हमें श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है कि वो जगह वहाँ पर है तो हमें गलत डायरेक्शंस उनको नहीं देनी है, नहीं बताना है। दिस इज़ योर होमवर्क। बच्चों, आप इन दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। व्हाट इज़ कंपास? कंपास क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट इज़ एन एटलस? एटलस किसे कहते हैं? इन दोनों के आंसर आप EVS नोटबुक में लिखोगे। थैंक यू बेटा। स्टे होम, स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू ऑल।